Hello everyone. So the most awaited and demanded video for the interview questions especially for teachers. Whatever we know, हमारे experience से जो हमें मालूम है वो best of our knowledge we'll be able to share with you. But obviously that's not something you have to go with. But if you'd like to know कि हमें हमारा experience कैसा रहा है आज तक interview questions के साथ और हमारे Sahil has also been the head of department in the school. He has conducted a couple of interviews, तो साहिल को काफ़ी कुछ knowledge है और मैंने और साहिल ने दोनों ही काफ़ी interviews दिए हैं यहाँ पे आने के बाद भी. तो उस knowledge को आपके साथ share करते हुए हम आज के session को आपके सामने रखेंगे. Baki right now we are looking for a nice location. We are trying to find a nice location so that you can also see Dubai around and you get pumped up to come here, honestly, right, Sahil? Absolutely. And एक छोटा सा डिस्क्लेमर इसमें ये है कि जो क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यूअर्स पूछे. वो इंटरव्यूअर अपने स्कूल के डायनामिक्स के हिसाब से उसको किस चीज़ की ज़रूरत है उसके हिसाब से क्वेश्चन वो डेफिनेटली अमेंड कर सकता है. पर इस वीडियो को आप एक प्रिपरेशन वीडियो ज़रूर कंसिडर कर सकते हो जिसमें आपको बहुत सारा प्रिपरेटरी मटेरियल मिल जाएगा इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होने के लिए. और गाइस मुझे बोलना है हमारी टीचिंग वाली वीडियोस बहुत पसंद की जा रही हैं. आपके क्वेश्चंस हमें रेगुलरली मिल रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू आंसर एज मेनी एज वी कैन. बाकी हमने we have made a note of all the questions and we are planning to make another separate video on the same which will be a Q&A session from us. और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो हमें सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं. तो प्लीज़ गाइज यू आर वॉचिंग आवर वीडियो, अगर आपको बिल्कुल थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही है हमारी वीडियोस देखकर तो हमें सब्सक्राइब कीजिए. हमारी 79% ऑडियंस, राइट? 80%. that's what it is, right? 80% ऑडियंस हमारी वीडियोस देख रही है उन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया. तो प्लीज विदाउट further ado subscribe to our channel and then we will begin with the video. Thank you so much for watching our channel. To never miss a video from us, please subscribe to our channel and click the bell icon for the regular updates. तो बेसिकली इंटरव्यू की तैयारी के साथ साथ आपको ये भी महसूस होना चाहिए कि आप दुबई में हो और इंशाल्लाह आप जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँचो और यहाँ पे जो हम आपको दिखा रहे हैं वो लाइव खुद ही विटनेस कर सको. हमारी प्रेयर्स और हमारे होप्स और हमारी बेस्ट विशेस सब कुछ आपके साथ है. तो जल्दी से हम अपना स्पॉट ढूंढ के और शुरू करते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस. आई होप यू एंजॉय दिस फैबुलस एटलांटिस एंड इट्स व्यूज़ and let's get the video started. तो पहला क्वेश्चन जो आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है दैट इज़ वेरी कॉमन एंड मोस्टली सबसे पूछा जाता है वो है टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ और इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपने आप को उसमें आपको जो आपने CV में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है वो कवर अप नहीं करना होता. उसमें आपको अपने हाइलाइट्स देने होते हैं. जैसे आपने म्यूज़िक सीखा, फॉर एग्जांपल मैं म्यूज़िक का एग्जांपल लेता हूँ. मैंने म्यूज़िक सीखा तो मेरे लिए वो एक की फैक्टर मेरी लाइफ में क्या था कि मैंने म्यूज़िक सीखना स्टार्ट किया. और जब मैं म्यूज़िक सीख रहा था क्या मेरी कोई ऐसी अचीवमेंट है जो मेरे CV में मेंशन नहीं है. म्यूज़िक मेरे लिए पर्सनली क्या मैटर करता है और एजुकेशन मेरे लिए क्या पर्सनली मैटर करती है. मैंने ये प्रोफेशन क्यों चूज़ किया. आपका कोई ऐसा इंसिडेंट लाइफ का जो कि गेम चेंजर था आपके लिए. आपकी अपनी क्वालिटी जैसे कि आपका ह्यूमर बहुत अच्छा है, आप सेंसिटिव हो, आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो. आपको इन सब चीज़ों के बारे में बात करनी है जो जिसमें CV में कोई जगह ही नहीं होती ये सब चीज़ें कवर करने की. आपकी नेचर, आपकी स्ट्रेंथ, जो आप बच्चों से कनेक्ट कर सकते हो जिससे आपको वो सारी चीज़ें इसके अंदर बोलनी होती है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. तो आप हमेशा इसके लिए एक अच्छा सा ड्राफ्ट बनाकर रखें कि आप बुलेट पॉइंट्स के अंदर आपकी क्या स्ट्रेंथ है जो आपने CV में मेंशन नहीं की हुई. यू कैन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दैट वन. सो दूसरा क्वेश्चन है द पोस्ट दैट यू हैव अप्लाइड फॉर, हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस रेलिवेंट फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट. अब मैथ्स के टीचर हो तो अगर आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हो और आपने प्राइमरी
पोजीशन के लिए ही, प्राइमरी मैथ टीचर के लिए ही अप्लाई किया है, देन यू कैन टॉक अबाउट इट कि आपने पिछले स्कूल में जो प्राइमरी में मैथ पढ़ाया था तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था और वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं इस पोजीशन के लिए। और अगर आपका पहले आपका एक्सपीरियंस प्राइमरी में है और आपने अगर अभी सेकेंडरी मैथ टीचर के लिए अप्लाई कर दिया है तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। बट कोई सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस नहीं है और प्राइमरी में है तो आप हमेशा ये बोल सकते हो कि द की फाइंडिंग्स और मेरे जो की टेक अवेज प्राइमरी को सिखाकर मैंने सीखा है वो मेरे को अभी सेकेंडरी में अप्लाई करना है। आई वांट टू गेन एक्सपीरियंस इन सेकेंडरी। और अगर आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में सेकेंडरी स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, जैसे आप क्लासेस जो ले रहे हो वो प्राइमरी स्कूल में ले रहे थे बट आपने एक क्लब किया आफ्टर स्कूल्स में, सेकेंडरी के बच्चे भी आ रहे थे, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो कि मेरे पास उस चीज़ का एक्सपीरियंस भी है। थर्ड क्वेश्चन कैन बी व्हाट यू कैन ब्रिंग और ऐड ऑन टू द स्कूल। अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको स्कूल के बारे में पता होना चाहिए कि स्कूल का लेवल क्या है, स्कूल में कितनी एक्टिविटीज़ हैं, स्कूल का पोजीशन क्या है, अगर इंस्पेक्शन होती है तो उसकी करंट रेटिंग क्या है, स्कूल को व्हाट वेंट वेल मतलब उनकी स्ट्रेंथ्स क्या बताई गई इंस्पेक्शन बोर्ड से, और वो उनके जो एरियाज़ ऑफ डेवलपमेंट है वो क्या है। तो आप उन्हीं एरियाज़ ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बात करके ये बताओगे कि हाउ आर यू गोइंग टू केटर दोज एरियाज़ ऑफ डेवलपमेंट और आपका क्या इनपुट रहेगा उसके अंदर। तो you can mention about your experience, your learning, and then findings from your learning that you're going to be directly cater to those areas of development, and that would be really impressive. That would be something that you can actually nail this question on. So your experience, and the recruiter will know that you know about his school, and then you directly have an action plan kind of thing as well, that these are your points and these are your strengths that go directly relevant to their areas of development. So that would be the good answer to that one. और इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिंक होता है, क्वेश्चन नंबर 4, वो है कि why our school, why do you want to join this particular school that you have applied. और उसी के लिए then you can always talk about their vision, mission, their philosophy, and what all opportunities they offer to the teachers, और students का outcome क्या है, teachers का outcome क्या है, क्या feedback है. Everything can be put together for you to actually convince them that you know about the vision and mission and philosophy of the school. You have a plan, basically. You have those skills that go very much relevant and in parallel to how the school functions and how the school works. तो आपका अगला क्वेश्चन हो सकता है that employer could ask you about the classroom scenario or take us through the whole lesson that you do. तो उस टाइम आप अपने क्लासरूम सिनारियो के बारे में क्या क्या बोल सकते हो, आप लेसन कैसे प्लान करते हो और आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हो लेसन प्लान करते हुए. डू यू इंक्लूड ऑल द चिल्ड्रन, डू यू इंक्लूड योर स्पेशल एजुकेशन नीड्स चिल्ड्रन, और आपके वेव 3 के बच्चे इंक्लूडेड होते हैं, उनके कोई IEPs हैं, आपके हाई अचीवर्स, मिडिल अचीवर्स, लो अचीवर्स को आप कैसे केटर कर रहे हो. डू यू प्रोवाइड इनफ सपोर्ट to the low achievers, basically you know the same comparison between equality and equity. तो आप अपने low achievers को कैसे support करते हो और आप अपने high achievers को कैसे challenge करते हो during the same task for achieving higher outcomes could be very very important. And अगर आप ये सारी चीज़ें cover करते हो अपने interview में तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी दैट दे गेट इम्प्रेस्ड कि आपकी क्लास में जो है लेसन की और पार्टिसिपेशन और एंगेजमेंट बहुत अच्छी है. उसके अलावा यू कैन टॉक अबाउट द क्लासरूम एनवायरनमेंट, द लर्निंग एनवायरनमेंट, द काइंड ऑफ पोस्टर्स, द काइंड ऑफ डिस्प्लेज यू हैव इन अराउंड द क्लासरूम, द काइंड ऑफ कीवर्ड्स you are introducing to the students. Do they know the meaning of the keywords that you are introducing in the lesson? Basically keywords could be like if you're talking about any new vocabulary that you have just introduced in your lesson, क्या बच्चों को उस new vocabulary का मतलब पता है. If you're repeatedly using that vocab in addressing the lesson, और अगर बच्चे को मतलब नहीं पता हो तो उसके सर के ऊपर से जाएगा, right? So do the students, and this can be checked. Again you can take them through the structure of the lesson. Excuses for that bike sound. So you can take them through the structure of your lesson from start to finish. How does your lesson look like, from starter to main body of the lesson to main task and to plenary of the lesson? What kind of different activities do you use to enhance the prior learning to start with, to address the prior learning, and then how do you build the activity towards the main task, and then plenary mein how do you wind up and how do you check the progress.
तो आप बच्चे स्टूडेंट्स अपने सारे स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने इम्प्रूवमेंट दिखाई है कि नहीं दिखाई है, वो आप कैसे मार्क करते हो, वो आप कैसे चेक करते हो. दीज आर अ रेंज ऑफ थिंग्स दैट यू कुड कवर इन योर लेसन, एंड बेसिकली दैट्स इट आई वुड से. हाउ डू यू are catering to each individual, how much do you know your students. तो उसके लिए आपके पास, जैसे कि हम यहाँ मेंटेन करते हैं एक ट्रैकिंग फ़ोल्डर. इफ़ यू नो अबाउट द ट्रैकिंग फ़ोल्डर यू कुड टॉक अबाउट द ट्रैकिंग फ़ोल्डर. तो उसमें क्या है कि आपको हर एक बच्चे के बारे में कितना पता है, अपने हर एक स्टूडेंट को आप कितना जानते हो. बेसिकली देयर हैव बीन एग्जांपल्स लाइक कि आपके स्टूडेंट का फेवरेट मील क्या है या फेवरेट चिप्स क्या है. डू यू नो योर स्टूडेंट्स टिल दैट एक्सटेंट? इफ़ यू डू देन it is just amazing. But if you don't, then you have to prepare for something like this to be addressed in the interview and impress the employers. Okay, so the next question that can be asked from you could be, what are your preferred methodologies, strategies in teaching? तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो. यू कैन टॉक अबाउट how do you promote differentiation in the classroom, how do you promote inclusion in the classroom, support to different groups, support to different learners, most of which I've already covered in my previous answer. But each of these topics could have an expansion, and each of these topics could have a different set of question, and you will have to answer each of these in detail. You might have to, okay, depending on what you get basically. You can also talk about different ability learners, different groups. If you have any SEN, ELL is English language learners, EAL is English as an additional language. तो अगर कोई किसी की फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, कोई नेटिव स्पीकर नहीं है, तो आप उसको, अगर उसको कोई डिफ़िकल्टी हो रही है कुछ चीज़ें समझने में, तो हाउ डू यू एड्रेस दैट. तो द आंसर्स कुड बी एज सिंपल एज यू कैन बडी देम अप विद समबडी हु स्पीक्स द सेम लैंग्वेज एज वेल एज इंग्लिश. तो उसको वो हेल्प मिल जाएगी. प्लस यू कैन यूज़ द लेसन कीवर्ड्स in the same language to enhance their learning. आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्ड्स की वोकैबुलरी की लिस्ट उनको ऑलरेडी दे सकते हो, जिसमें सेम वर्ड हैज़ बीन रिटन एंड एक्सप्लेन्ड इन देयर लैंग्वेज एज वेल एज इन इंग्लिश. And you can use a lot of gestures, you can use the body language to make sure that they are understanding what you meant, what you are explaining and mentioning in the classroom. And make sure to keep checking with them if they are having any troubles or difficulties. This is what the model answer I would suggest you to give. And the second point is, आप include कर सकते हो how do you encourage inquiry in the classroom, and how do you encourage students to lead the lesson basically, and encourage them to answer and research about the topics. और आप कैसे ग्रुप टास्क्स या पीयर टास्क्स encourage करते हो. How do you involve students feedbacking each other and engaging in the critical thinking and coming up with their own answers to the task or to the findings of the lesson. So this all can be included in this. And following up with the similar set of question is again the classroom environment, which I have covered briefly. Classroom environment could again be how positive your student teacher relationship is. Are students comfortable to ask you questions? तो ये सारी चीज़ें, and these are the few things you can talk about in your lesson. And I'm sure the employer would know how concrete your subject knowledge as well as your pastoral care towards the classroom is, and your concern towards your students is. So Priya gave you some fantastic information about what you can include in your answer, about your methodology and about your preferences. What I would like to add one point on the top of that is, an interviewer can ask you, so what was the impact of everything that you do or everything that you have managed to get in the class? What was the impact overall on the students? And that question actually he's asking you because he wants to know, do you have enough knowledge of the data of your students? Which student is at what grade, and do you know what you are going to do about that to get them on to the next possible grade or to a better grade? And also, do your students know what grade they are at and what do they need to do to go a level above? Well, I know when we talk about the students, you can always talk about if you have a thorough knowledge about the data that lies with you. So your assessment data, आपने बच्चों को ग्रेड दिए, आप उसके ऊपर क्या रिएक्ट कर रहे हो, आपने ग्रेड्स दिए, आपने एक क्लास का डेटा देखा, आपने क्या उसके अंदर ट्रेंड्स ऑब्जर्व किए कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अच्छा ग्रेड नहीं कर पा रहे, जो अच्छा मार्क नहीं ले पा रहे, जो अचीव नहीं कर पा रहे, then what are you going to do about it? अगला क्वेश्चन हो सकता है कि आपको
employer wants to know how are you a lifelong learner. अब question कुछ भी हो सकता है. Question हो सकता है कि is there any CPD or professional development course that you have attended, or it could be are you kind of constantly developing your skills at this rapidly changing world. So आप उसका जवाब ये देख सकते हो. आपने सारे कोर्सेज जो आपने आज तक किए हैं, इट कुड बी सेफ गार्डिंग, चाइल्ड प्रोटेक्शन, एंटी बुलिंग, साइबर बुलिंग, जो भी आपने अलग से CPDs ली है, आपको सब मेंशन करनी है कि मैं थोड़े थोड़े टाइम के बाद कुछ ना कुछ CPD या PDs करता रहता हूँ. इफ़ यू आर एन IB टीचर, यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट ऑल योर trainings that you have taken so far, and apart from those trainings you can also talk about your initiative, that like you maybe you have joined some Facebook group, you have contacted people on LinkedIn to ask them questions about discussing about your pedagogy skills, like your teaching pedagogies, your schemes of works. You have been in collaboration with other teachers within the school, so your peers are helping you to a great extent. So the recruiter wants to know that if, for example, the COVID situation came, nobody was expecting that, right? So did you cope up with that? And that goes to the next question. Interviewers now are asking, how have you adapted the blended approach, or how have you adapted the COVID situation? How are you doing all those things that you were doing normally in the classroom with the COVID situation? So the short question that can be asked is, what is your COVID-19 story? And there you go. From there you will have to start now how things were before, and how have you adapted to all those strategies in your classroom onto the virtual digital platform. तो इसके लिए भी एक अपना लिख लेना बुलेट पॉइंट्स, बिकॉज ये आजकल बहुत ही रीसेंट क्वेश्चन है और ये हर एक इंटरव्यू पूछ ही रहा, बिकॉज ऑब्वियसली एवरीबडी इज़ कीन टू नो कि अगर हमारा अगले साल भी ब्लेंडेड या ऑनलाइन चलता है तो आप कैसे उस चीज़ को उसे अडेप्ट करो. एंड दैट गेट्स अस टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ गुड यू आर विद टेक्नोलॉजी. आपको इसके अंदर सारी चीज़ें जो आपको टेक्नोलॉजी में आती है, कंप्यूटिंग स्किल्स अपने सामने बता रहे हैं कि आई हैव यूज दिस सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, गूगल क्लासरूम, फिनिक्स, जो भी आपने यूज़ किया, असेसमेंट, प्लानिंग, लाइव कॉल के लिए, वो सब आपको उसके अंदर बताना है. और आप कैसे बच्चों को कोलैबोरेशन करवा रहे हो, पीयर असेसमेंट बच्चे कैसे कर रहे हैं, वो सारे आपको सॉफ्टवेयर्स के नाम लेने हैं, डिवाइसेस के नाम लेने हैं जो आपने यूज़ किए. एंड बेसिकली इफ़ यू हैव डन एनी कोर्सेज that is related to technology, that would really add on to your candidature when the employer is interviewing you. नहीं. Okay. So the next question is, or could be, that how do you collaborate with your peers? How do you collaborate with your colleagues? How do you collaborate within your schemes of work? So you can always mention, if you have experience, it'll be a flawless and smooth question to answer, because you can now tell the interviewer how you have been collaborating with other peers, like with other subject teachers. For example, I'm teaching music, I have collaborated with science teacher, I have collaborated with math teacher, I have collaborated with the humanities teacher, because when I was doing humanities I was covering the world music. When I was collaborating with science, I was covering the science behind the sound of the instruments. When I was collaborating with math teacher, I was talking about the addition and the beats and how the beats work basically in writing music. So you know what I mean. So you have to basically let the interview know how are you going to be engaging your subject with other subjects within the school, and how are you collaborating with other teachers. तो साहिल ने आपको बहुत सारी इंसाइट दे दी. आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस दैट प्रिया ने ज़्यादा दिया है. नहीं, एब्सोल्युटली साहिल ने ज़्यादा दिया है, विच इज़ गुड. आई एम हैप्पी, क्योंकि मुझे खुद भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला. बाकी यू नो व्हाट, लाइफ इज़ सच दैट इट टीचेस यू लॉट्स ऑफ थिंग्स विद योर एक्सपीरियंस. तो आप रिक्रूटर को ये ज़रूर बताओ हाउ कीन यू आर टू लर्न न्यू थिंग्स, हाउ एंथुजियास्टिक यू आर अबाउट योर ओन सब्जेक्ट, एंड हाउ हैप्पी यू आर to work with the students, and you love to work as a teacher. This is your profession and you are happy in it. Your love for your profession would give such a positive vibe to the recruiter कि उनको ऐसा लगेगा कि that you are the right candidate and you're the right choice for them. With all that we've covered, we would again like to tell you that please subscribe to our channel, because you haven't. Basically, you know, be positive and apply. Keep applying. A lot of people keep telling us कि हमने इतनी सारी जगह अप्लाई किया, हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है. बट ऐसा नहीं होता. सब कुछ सबके लिए नहीं होता. You will have your own
position and your own opportunity very soon. Don't lose hope. Keep applying. And we wish you all the very best. Stay hopeful, stay positive, keep on applying as Priya said, and wait for the next video to come. Let's see. Thank you for watching. Bye-bye. Bye bye.